हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले संस्कृत सब्जेक्ट में सेक्शन ई की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने संस्कृत का सेक्शन सी और डी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग्स, हमारे क्लास 10 के बैच स्टार्ट हो गए 20 डेट से, अप्रैल से। मे भी अगर आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हो। ओके, स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ई का संस्कृत का क्या लिखा है क्वेश्चन 1 में। श्लोक पूर्ति, मतलब श्लोक आपको पूर्ण करना है। कंप्लीट द वर्सेस इज। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। नास्ति जातु डैश अ रिपवस्था। तो यहाँ पे क्या आएगा। नास्ति जातु रिपुर नाम मित्र नामम न विद्यते व्यवहाराच जायन्ते मित्राणि रिपवस्था। ओके। सेकंड, दरिद्राय धनम डैश च भोजनम। दरिद्राय धनम देय ज्ञानम देय जदायम च पिपासितायम पानीयम शुद्धितायम च भोजनम। नेक्स्ट, नास्ति मेघसम डैश करके सेकंड लिखा है दानस्यम प्रियम। ये आपको श्लोक पूर्ति करनी है। नास्ति मेघसमम तोयम नास्ति चात समम बलम नास्ति चक्षुसम तेजो नास्ति दानय समम प्रियम। नेक्स्ट, आत्मरक्षणात् आत्मरक्षणाम स्वदोजसया। उसमें क्या आएगा। आत्मरक्षणार्थम सुपरीक्षित कारिणम आपदो नोपदद्ये पुरुषाणाम स्वदोजता। नेक्स्ट, चलम चिता डैश स जीवति। तो चलम चिता चले जीवित यौवने चाल चलमिदं सर्वकीर्तिरवे हि जीविता। सने सने पंथा डैश सने पंथा सने कंथा सने पर्वतुलध्यम सने वीर्ति पज्योतम सने। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 2 उसके बाद में आएगा। मे भी बहुत कम मैंने सॉल्यूशन किए थे सेक्शन ई के, बट सेक्शन ई के क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सर्वेन्द्रियाणि संयमम बकवत पतितो जनम। इसका आपको करना है अर्थ विस्तारम। राइट, इंग्लिश में ही करेंगे। एक्सपेंड द मीनिंग। अ वाइज मैन शुड accomplish all the works fallen to his share and due time and the place, restoring his sense like a crave. एक्सपांसन क्या होगा। The crane standing in the shallow water is so still and the moveless that it appears like a statue, but its attention is fully focused on the fish in the water while doing the various jobs that come to us because we are living in the particular place at the particular time. We should concentrate on what are doing at a given time, controlling our sense organs. Right? मोरल क्या मिलता है। Control to sense organs in order to accomplish a particular job can be learnt by observing the crave at work. सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन क्या आएगा। ट्रांसलेशंस। वन शुड ऑलवेज लर्न 3 थिंग्स फ्रॉम अ डोंकी। से 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। इट कैरी द बर्डन विदाउट गेटिंग द टायर्ड। ओके। और इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द टायर्ड इफ डज नॉट माइंड हीट और कोल्ड। देखो एक्सपांसन किया है। द डोंकी डज नॉट गेट द बोर्ड और टायर्ड। देखो डोंकी जब भी बोर्ड उठाता है तो टायर्ड नहीं होता डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द हीट और कोल्ड। इसीलिए वजह से अपने हीट और कोल्ड अफेक्ट हो तो अपने को टायर्ड या तो डरना नहीं चाहिए। इट ऑलवेज लुक्स अ कॉन्सेंट्रेट लाइक कॉन्सेंटेंट, मतलब थोड़े टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। वाइल डूइंग द रूटिंग माउंटेनियस जॉब्स वी शुड फॉलो द आइडल ऑफ द डोंकी that work silently, patiently and with the kind of resignations. Most moral क्या आएगा। Most of the things we are the required to do our workplace are routine and mountainous होना चाहिए। Every job is bound to get the mountainous and after a time we should learn to our job without grumbling or calling
द डोंकी वॉक्स की तरह कॉलिंग नहीं करना चाहिए, मतलब बार बार में प्रेशर नहीं आना चाहिए कि बार बार में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको एक काम से रिकॉन्साइल विद द रियलिटी एंड बी कंटेंट विद द योर लॉट। थर्ड का ट्रांसलेशन क्या आएगा? वन शुड लर्न फॉर थिंग्स फ्रॉम द कॉक, fighting, getting early in the morning, eating with the relatives, protecting the woman, fog in the calamity। एक्सपेंशन क्या आता है? A cock wakes up even before the sunrise. It moves about the looking for the food with the relatives. What we call the community life nowadays can be seen among the cocks and hens when they fight. It is the worth watching finally, and they protect their woman in difficulty। मोरल क्या आता है? स्टार्टिंग द डे अर्ली, अर्ली का डे स्टार्ट मतलब जल्दी उठो, एंड बीइंग विथ अवर पीपल्स के साथ मिलो, ईटिंग करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजनेबिलिटी ऑफ द हैप्पी लाइफ, ओकेजनल फाइट आर द अनअवॉइडेड करो, ओकेजनली फाइट को अनअवॉइड करो, बट दिस शुड बी इजीली फॉरगेटन आफ्टरवर्ड्स। वी शुड प्रोटेक्ट करो वीक, अपने वीक वर्क को, एंड दे आर द डिफिकल्ट को। फर्स्ट सेमिस्टर का मतलब फर्स्ट टर्म का स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर का है पहले, तक्ष कस्य विषम, द स्नैक हैज पॉइजन इन इट्स टीथ, the fly has poison in its head, the scorpion has the poison in its tail, a weekend person wall the body it full of poisons। ओके, तो इसका मीनिंग क्या आता है? द फॉलोइंग वर्सेज आर से दैट द वीक पर्सन इज द मच मोर डेंजरस, वीक पर्सन होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है स्नैक की तरह, अ फ्लाई और स्कॉर्पियन की तरह। व्हेन अ स्नैक बाइट्स पॉइजन कम आउट द टीथ के अंदर, एंड हेड ऑफ द फ्लाई पॉइजनस। व्हेन इट टचेज द एनी फूड को अगर आप टच करते हो आइटम्स को, द फूड बिकम द पॉइजनस हो जाता है, फुल ऑफ जम्स का हो जाता है, विच एडवर्सली अफेक्ट द अन कंज्यूमर्स। A scorpion sting with its tail. A scorpion stings with its tail and harms the one that comes in contact में आ जाता है with its by the poison in its tail, and however snake fly करेगा, and scorpion are less harmful as their harm is limited। A weak person much more dangerous, weak person बहुत ज़्यादा dangerous होता है। A word means a body, but it can also mean a constituent part, so all the constituent part of the weak हो जाता है poison की तरह। Our body's mind, speech, thoughts, etc. is a full of the poisons। मोरल क्या मिलता है? वन शुड बी एक्स्ट्रा कॉशंस while the dealing with the weak persons। सेमिस्टर वन का, सेमिस्टर सेकेंड टर्म का फर्स्ट नंबर, really speaking there is no such a thing as an the enemy or the friend, person become the friends as well as the enemy due to circumstances। In the story told by the great sage of Bhishma, the mouse and the cat get the trap in the net। माउट और कैट क्या कहते, ट्रैप कर देते उसके नेट को, and the hunters, the mouse help to the cat as accept the by cutting the net, and later when the hunter goes away, the cat call the mouse, make a friends with it। In the changed circumstances, the mouse cannot trust the cat। This show the clearly the role of the circumstances making a person is a friend or enemy। person आपका जो friend होता है वो friend भी होता है और enemy भी होता है। Two person are become the friend when they have the common interest। when the circumstances change हो जाता है they become the enemy, neither friendship and nor amenity of the permanent। नेक्स्ट सेकंड नंबर शत्रु रूपा वाला है। Indeed the friend assume the guise of foe and the foes assume the guise as a friend। when analyzing the friendship or the form होता है, it is the difficult for the parties to understand the whatever the other parties and moved by the desire or angers। इसका क्या आएगा? एक्सपेंशंस मीनिंग्स। द ग्रेट सैग ऑफ द भीष्म एक्सप्लेनिंग द युधिष्ठिर को बताते हैं कि रियलिटी अबाउट द फ्रेंड एंड द फो। अकॉर्डिंग टू द भीष्म द पर्सन वो सेम टू द फ्रेंड टुडे मे भी कल आपका एनिमी भी हो सकता है।
एंड पर्सन हु आर द एनिमी, जो कल में एनिमी वो टर्न इनटू फ्रेंड भी हो सकता है. द सर्कमटेंसेस आर द चेंजेस हो सकते हैं फ्रेंड्स के इनटू द फो and the foe into the friend. We don't know at the outset and what whether it desire the anger and mood the persons. इसका क्या आएगा मोरल? वन शुड ऑलवेज बी अलर्ट होना चाहिए, कंटिन्यूस टेकिंग एंड द कंसिडरेशन द फैक्ट दैट फ्रेंड्स एंड एनिमीज आर मेड बाय द सर्कमटेंसेस दैट कीप द चेंजिंग. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है. इसके भी जितने भी मुझे पता चले उतने मैंने लिखे ऑलरेडी. मैं मैथ्स एंड साइंस पढ़ाता हूँ, बट दैट यहाँ पे मैंने संस्कृत भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स इन इंग्लिश में लिखना है आपको. तो फर्स्ट है पंचतंत्र. फाइव मीन्स 5 तंत्र. पंचतंत्र को बोला जाता है 5 तंत्र. अ बुक ऑफ विद द 5 सेक्शन में लिखा गया नेम्स. पंचतंत्र इज रिटन बाय द विष्णु शर्मा ने लिखा गया टू टीच द किंग ऑफ द अमर शक्ति. 3 ignorant and the foolish prince. It narrated these stories and within the short span of the 6 months had the maid of the princess wise and expert the skills. These books had the animals and the birds regarding जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, main characters and translated कर सकते हैं many other languages. आचार्य चरक. आचार्य चरक ही वॉज द ग्रेट आयुर्वेदा स्कॉलर थे. ही लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन मेडिसिन के बोला जाता है. सो ही नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन. चरक संहिता भी लिखी थी, हैज़ रिटर्न एंड वी फाइंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिसीजेस अलॉन्ग विद देयर मेडिसिन लिखा था एंड ट्रीटमेंट भी लिखा था. हाउ अ पर्सन बिहेव्स ऑल्सो अफेक्टेड हिज हेल्थ एंड दिस इज द आचार्य चरक एडवाइस. अकॉर्डिंग टू द हिम द पर्सन हु ईट एंड बिहेव द प्रॉपरली स्टे हेल्थी. उसके बाद क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी दिस इज द फेमस संस्कृत ग्रामर है बुक्स. द ग्रेट सैग इज द पाणिनि ने लिखा था, व्रॉट इन द ट्रीटाइज ऑन द संस्कृत ग्रामर के बारे में. इट हैज़ द 8 चैप्टर्स उसके अंदर, हैंस दे आर द अष्टाध्याय बोला जाता है. देयर आर द नियरली द 200 सूत्रास इसके अंदर लिखे गए. This treatise is an the excellent product of the human brain and the book has been written in the very scientific and logical manners. Such information on the grammar is not available anywhere else in that the world. The book of is written in the Sutra Shaili. The 8 chapters have the 4 section में लिखा गया है. So there are the 32 section and almost the 400 rules. आचार्य पाणिनि वॉज द ग्रामर एंड रूल्स ऑफ द लौकिक संस्कृत के बारे में बताया गया. नेक्स्ट अभिमन्यु. करेक्ट. इसके बाद आएगा अभिमन्यु 4th नंबर. अभिमन्यु वॉज द सन ऑफ द श्री कृष्ण सिस्टर सुभद्रा एंड अर्जुन का अभिमन्यु. द डैड ऑफ द ब्रेव डेथ एंड ड्यूरिंग द महाभारत में वॉर में मरा था. अभिमन्यु इज द कैरेक्टर इज द सीन द ऑथर ऑफ द भाषा ऑफ द 3 act प्ले पंच Ratram is that are the give extra and the Duryodhan have to the half of the kingdom of the Pandavas. If they are the fond of with the 5 days, this was the according to the Dronacharya conditions. So the Bhishma advised the Kaurava march towards the Viratnagar and the adopt kiya the king Virat cows. Balav and the Bruhanalla, देखो Bruhanalla the foil. These attempt to derive away from the Kauravas and capture के अभिमन्यु को, and अभिमन्यु does the not recognize the Bhima and the Arjun who are the disguise किया. So the 2 elders have the disguise dialogues, the haze and he tease him. The dialogue is entering to the also reveals the अभिमन्यु and finally and the familial bravely and cultures. उसके बाद कौन था लास्ट नंबर? धनंजय. This is the one of the 10 names of the Arjunas, the 3rd sons of the born the Kunti. He was the called the Dhananjay because he had the conquered of that all kings at the times of the राजस्या के टाइम पे बहुत सारा उन्होंने वॉर किया था और जीता भी था धनंजय ने. इसके अलावा टाइम्स ऑफ द रजोस्या द यज्ञ इज कलेक्ट द किंग्स एंड एट द टाइम ऑफ द राजसो यज्ञ, कौन सा राजसू यज्ञ किया था, कलेक्ट द वेल्थ ऑफ द फ्रॉम के लिए. एंड द सन बॉर्न इन द कुंती द वाइट विद द इंदिरा वॉज द
गांडीवधारी अर्जुन श्री कृष्ण became the charioteer दिया था महाभारत में war and gave in the precious advice भी दिया था भगवत गीता. When the Yudhishthira performed the Rajsu Yagna and Arjun had travelled to all the through and kingdoms and amassed किया था large amount of the wealth. So he was given the name of the Dhananjay and that Arjuna 10 names was even the motivate in the Mahabharata. First term का कपोतराज चित्रग्रीवी, right? The king of that peasant of the Chitragriva Yasya Sah, the one of the whose neck of the multicolored these peasants in the main characters of the fables and Hitobdas written in the Narayan Pandit. He is the king of the peasants and he advised the peasant attracted to the rice grains to the knot of the down. He wants them to beware of dangers and caused by the greed. In the end of the also give the courageous on is the family trapped in the net and advises them to fly all together along with the net. With the help of his friends, the king of his mice, his and he frees all the peasants. Thus the column and the courageous along the uniting and the family achieving the goal. Bhoj, Raja Bhoj. Both the king of the Dhara and the lovers of fine the arts के lover थे and learning के. He was the devoted the peoples and he gave the shelter to scholar and artisan. Knowledge is the intelligent and skilled scholar always the got respect in his the kingdom. They also got the appropriate gift from the kings. The progress of the literature, knowledge and poetry katha was it the best during the reason what time पे. Even the common public king भी थे. Bhoja was the kingdom of the could compose किया the poetry, skilled and the many arts. नालंदा नालंदा इज द वन टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटी थी जो मगध में आई हुई थी. मगध किंगडम ऑफ मगध का था. स्टूडेंट फ्रॉम दैट फार मतलब स्टूडेंट बहुत दूर से आते थे. यूज टू द सीक एडमिशंस इन इट एंड दे आर द वुड कम हियर. यहाँ पे आते थे स्टडी रिगार्डिंग लाइकिंग एंड इंटरेस्ट वाइज एंड दिस द संस्कृत प्रकृत साइंस एंड एक्सेट्रा. इसके बाद आता है लघुपनक. लघुपनक जी. नालंदा के बाद आता है द क्रो लघुपनक. द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ द सहति कार्य साधिका विच इज द वन ऑफ द स्टोरी ऑफ द हितोपदेश की एक स्टोरी थी रिटन बाय द नारायण पंडित ने लिखी थी. दैट मीन्स द क्विक एंड पतनक इज द वन हु इज द फ्लाइज अवे. A crow flies away from the comes down and quickly and so the name is the appropriate according to the speciality of the Sanskrit story थी उसकी. Characters are the mostly is the based on their qualities and actions. Thus the crow names of the Laghupanak and also displays his quality. The flying quickly and the one who lived in the silk cotton trees or the banks of the Godavari and so the hunters and the looking like a second god of death. And early in the morning he feel upset at this and thinks and bad the early in the morning so I do not know what undesirable things it will show. उसके बाद आगे घट पंडित is a scholar who is the completely filled with the knowledge just like the pot is full of water की तरह. The young man who has the unknown the Bhoja and who had come to the kingdom was the completely knowledgeable था. So the thoughtful thoughts of himself a Ghat Pandit a scholar who is the completely filled with the knowledge and just the pot जिस तरह completely होता है उस तरह. उसके बाद आता है देखो सेकंड टर्म का आचार्य आर्य चारुदत्त. श्री चारुदत्त मैंने एक नहीं लिखा था ताराधी पनी भानन. आचार्य चारुदत्त sorry. Sri Charudatta is the protagonist was that wealthy man but is the poor today. He is the hero of the Mruchakatam. Charudatta is the Brahmin by the birth of the businessman by the professions. His personality is impressive thing. He has become the very respected among the citizens and due to the generous nature.
when the blame goes from innocent the Charudata and to the real culprit of Sakar, and who has the framed in the Charudatta enhance is the glory of traveling. Next, in the last Sannyasinam, to the sannyasiri, the sannyasi is the one who has the rounded everything in the saintly persons. देन क्लियर। यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। मैं भी वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।